नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरा रुख पर हमारा वीकली स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स दिस वीक। आज का स्पोर्ट्स दिस वीक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से आउट होने पर और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की एंट्री होने पर। ये बड़ा ही ड्रामेटिक डिसीजन रहा, नॉट ओनली ड्रामेटिक, इसके पीछे जो कहानी रही वो बड़ी ड्रामेटिक रही जो कि पिछले लगभग 1 महीने से चल रही है। अब इसमें पाकिस्तान का रोल भी हेलो। एक बड़ा क्रूशियल रोल सामने आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान भी आईसीसी को धमकी दे रहा है कि अगर मतलब वो भी शायद बांग्लादेश की तरह वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देगा तो उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट के अस्तित्व के ऊपर भी क्या होगा वो भी बात करेंगे और शायद ये भी खबरें आ रही है कि आईसीसी पाकिस्तान को बैन भी कर सकता है। खैर ये चीजें तो हमारे आने वाली चर्चा के अंदर हम लोग बात करेंगे ही सही, साथ ही कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर भी बात करेंगे। इंडियन टीम के कोच गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल के ऊपर, जो भारत और न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज चल रही है उसके ऊपर, और जो हाल ही में कंप्लीट हुई ओडीआई सीरीज उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम अभी है और उसको कैसे आगे एड्रेस किया जा सकता है। सो अनूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और इस स्पोर्ट्स शो के लिए बात करने के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एब्सोल्युटली। बहुत ही अच्छा लगता है शो करने में और ऑडियंस की सवाल लेने में। आजकल क्रिकेट जगत में ज़्यादा पॉलिटिक्स की उथल-पुथल है। इतनी पॉलिटिक्स तो शायद हमारे देश में भी नहीं है, जितना कि क्रिकेट में है। 10 कंट्री खेलते हैं, राइट, लेकिन ज़्यादा पॉलिटिक्स वहाँ पे होता है। राइट। ओके, सो अनूप, सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं। अभी ओके। कल ही ये कंफर्म हुआ कि बांग्लादेश जो है वो ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को एंट्री मिलेगी। हाँ आप जी। अगर इस पूरे 1 महीने के पिछले घटनाक्रम को देखेंगे, जिसके अंदर जब बीसीसीआई ने एक बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल से रिलीज करने को कहा और कोलकाता नाइट राइडर ने उसको रिलीज कर दिया। उसके बाद से बांग्लादेश जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स फिर और भी कई दूसरी चीजें करके वर्ल्ड कप में हम भारत नहीं जाना चाहते हैं, हमारा ग्रुप चेंज कर दो या हमारे मैचेस श्रीलंका में कर दो, कुछ ना कुछ चीजें होती रही। उसके पहले कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था, बट अचानक एक करेक्ट। प्लेयर को आईपीएल से बाहर करने के बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स आने लगे। ये स्पेशली वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी तरफ से हो रहा है। आई एम सेइंग इंटरिम गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट, राइट? तो ओके। वहाँ से सारी चीज़ें हो रही है। इनफैक्ट जो भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, वो भी अपने पहले टेस्ट मैच जो बांग्लादेश खेला था उसमें भारत की अगेंस्ट सेंचुरी बनाए थे। वो ढाका में ही वो मैच हुआ था। भारत ने बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश क्रिकेट के लिए कितना कुछ किया है इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। राइट फ्रॉम उनके डे वन से जहाँ पे उनको टेस्ट दर्जा मिला वहां से लेके तो आज तक बांग्लादेश क्रिकेट को ऊपर उठाने के लिए भारत का कंट्रीब्यूशन एक अनमैचेबल कंट्रीब्यूशन है। इन सब ओके। चीजों को देखते हुए अभी जो बांग्लादेश का डिसीजन है कि वो भारत में नहीं आएगा, उन्होंने आईसीसी को अपडेट भी नहीं किया, फिर आईसीसी ने अपने अल्टीमेटम खत्म होने के बाद बांग्लादेश को बाहर करके स्कॉटलैंड को ले लिया। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ये एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिक्स स्पोर्ट में घुस गया है राहुल। अगर मैं बहुत ही एक निष्पक्ष व्यू दूँ आपको, विदाउट कीपिंग ऑल द इमोशंस असाइड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। आई थिंक द इवेंट स्टार्टेड फ्रॉम द फैक्ट दैट जब मुस्तफिजर को लाइक आई डोंट नो क्या कारण था, बिकॉज कारण तो बताया नहीं गया है, तो एग्जैक्ट रीजन तो हमें पता नहीं लग रहा है, बट किसी कारणवश लाइक मुस्तफिजर को आईपीएल से हटाने के लिए कहा गया था। जितना तक हमने सुना है, आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई स्टैंड आया था। इट वाज बीसीसीआई। सम सॉर्ट ऑफ बीसीसीआई की तरफ से कुछ तो आया नहीं, नो इट वाज, वहां से ये इशू चालू हुआ, राइट? सो फर्स्टली हमें सोचना चाहिए कि क्या ये स्टार्ट ऑफ द थिंग नेसेसिटी था कि नहीं, राइट? वॉज इट रियली नीडेड कि मुस्तफिजर को इस श्रृंखला से निकाले? क्या सॉल्यूशन उस स्टैंड ने कर दिया आपको? आई डू नॉट नो, बट that was the start of the problem in that sense from a cricketing perspective, right? We are not talking about the political issue that is happening between like and the issues that are happening between India and Bangladesh as a nation. We are not talking about राइट। politics or government there. Purely cricketing terms में the issue started when this happened with BCCI, right? uh, Again,
I have never understood why that was done because like मुस्तफिजुर नहीं खेल रहे हैं उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. उसके बाद जो घटना घटी है वो मेरे मेरे अंतर में बहुत ही स्ट्रेंज है बिकॉज लेट्स लुक एट इट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स राइट. बांग्लादेश ने कहा कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है. अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो फिर मुस्तफिजुर के निकालने के पहले तो आपने कभी बताया नहीं कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है राइट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो फिर सिक्योरिटी प्रॉब्लम कहाँ से आया राइट. दूसरी चीज एक आईसीसी टूर्नामेंट और आईपीएल के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है. मुस्तफिजुर को निकाला गया दैट इज अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट. लेट्स बी वेरी क्लियर. आप जितने भी दंडोरा पीट लें कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लीग है लाइक उससे बेहतर कुछ भी नहीं है लेकिन आईपीएल इज अ डोमेस्टिक लीग. It is an Indian Premier League conducted by India, where international players play. Yes, it is the number one cricketing league. We're not disputing that, but that doesn't make it an international competition. It is not conducted by ICC. It is not conducted by. It's not like definitely not an ICC tournament, right? Right. Rules and regulations don't follow all cricketing rules and regulations, right? The rules and राइट. regulations of IPL are very different to the rules and regulations of एब्सोल्युटली. ICC. So first and foremost, ICC event में आईसीसी की सिक्योरिटी टीम एसेस करती है कि एक पर्टिकुलर जगह इज सिक्योर इनफ टू प्ले और नॉट राइट. आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने कोई भी इशू नहीं बताया इंडिया में बांग्लादेश प्लेयर्स को खेलने के लिए. सो बांग्लादेश का ये कहना कि भाई वहां पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है विल फॉल फ्लैट ऑन देयर ओन फीट बिकॉज वो इट विल नॉट फ्लाई एट द आईसीसी बिकॉज वन सिक्योरिटी का इशू अगर पहले था तो देन इट शुड हैव बीन रेस्ड लॉन्ग टाइम अगो राइट. काफी एग्जांपल दिया गया है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था तो इंडिया ने बोला कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में मूव हो गए थे. नाउ दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो. लेट मी एक्सप्लेन दैट फॉर व्यूअर्स राइट. इंडिया और पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी सालों से चल रही है. ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इनफैक्ट ऑल द आईसीसी हैज डन इज to prevent the sort of issues that keep happening हर टूर्नामेंट के पहले कि इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो इंडिया बोलता है कि मैं नहीं खेलूंगा, पाकिस्तान बोलता है मैं नहीं खेलूंगा. ये हर टाइम आईसीसी को एक झंझट उठाना पड़ता है कि भाई ये मैच रखे, कहाँ रखे, क्या करें. तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी तरह से एक मेथोडोलॉजी वर्कआउट किया कि जब इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे न्यूट्रल टेरिटरी में दे विल ओनली प्ले न्यूट्रल टेरिटरी. तो भले ही वो टूर्नामेंट इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, भले ही वो आईसीसी की सेमीफाइनल हो या फाइनल हो. तो ये इतना याद रखिए अगर पाकिस्तान खेलता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विच आई एक्सपेक्ट देम टू प्ले और अगर वो फाइनल्स तक पहुंच गए तो फाइनल्स इंडिया में नहीं होगा. लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. बीसीसीआई जितना भी सर मार ले कि भाई हमारा टूर्नामेंट है हमें फाइनल यहाँ पे रखना है, नहीं होगा. इट्स सेम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी. जब चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था तो अगर पाकिस्तान फाइनल में आया होगा तो द फाइनल वुड हैव हैपेंड इन पाकिस्तान बिकॉज इंडिया फाइनल में आया और इंडिया और पाकिस्तान की फाइनल थी तो वो फाइनल दुबई में हुआ था राइट. सो ये दोनों इशू को आप मिला नहीं सकते हो क्योंकि पहले तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ हो गया है आईसीसी दैट जो भी टूर्नामेंट होगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वो एक न्यूट्रल वेन्यू में होगा राइट. सो it doesn't matter whether it's India playing the World Cup conducted in India or Pakistan hosting another trophy anywhere it's already agreed. India बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कोई भी इशू नहीं है right, in that sense from a cricketing perspective right. There is no fight, there is no, as far as I know there is no government message कि आप बांग्लादेश नहीं जा सकते हो. बांग्लादेश गवर्नमेंट की मैंने तो सुना नहीं है कि मैसेज कि आप इंडिया नहीं आ सकते हो. तो ये सिनेरियो में अगर बांग्लादेश जाके ये मैटर आईसीसी में डालेगा तो उनकी जीतने के आसार कम थे राइट. दूसरी चीज अगर आप बोलते हो कि टूर्नामेंट उन्होंने जो सजेशन दिया कि भाई ऐसा कर दो कि आप हमें वो ग्रुप में डाल दो जहां पे हमारी सारी मैच श्रीलंका में होगी, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि स्कॉटलैंड जो टीम वो ग्रुप में है जो वो उन्होंने ऑलरेडी मैचेस की शेड्यूल निकाल दी है. समझ लीजिए आयरलैंड है वो ग्रुप में, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली ग्रुपिंग याद नहीं. लेट्स से आयरलैंड इज इन द ग्रुप और एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि आयरलैंड वो ग्रुप में आ जाता है जहां पे सारे मैचेस इंडिया में होते हैं और उस जगह पे आप बांग्लादेश को डाल देते हो राइट. तो अभी जिन लोगों ने भी टिकट बुकिंग की है आयरलैंड में मैच देखने के लिए वो क्या करेंगे, सडनली उनको इंडिया की टिकट तो नहीं मिलेगी ना, इंडियन स्टेडियम की तो टिकट नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया है कि भाई मैचेस कोलंबो में होंगे फॉर एग्जांपल राइट, और उसके बेसिस पे उन्होंने कोलंबो के लिए टिकट लिया होगा पॉसिबल राइट.
आयरलैंड, अगर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, उन्होंने पूरे अपने प्लानिंग इस तरह से किया होगा कि भाई मेरे सारे मैचेस कोलंबो में होने वाला है, कोलंबो की पिच ये होगी, इसके बेसिस पे मैं अपना स्क्वाड तैयार करूंगा। सो आप ये नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज आप बांग्लादेश हो, आप बिगर क्रिकेट टीम हो कंपेयर टू से एन आयरलैंड, कि आप आयरलैंड को सडनली बोलो कि आप अपने सारे प्लान चेंज कर लें, आयरलैंड के सारे फैंस को बोल दो कि आप अपने सारे टिकट कैंसिल कर लें, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज अ ग्लोबल टूर्नामेंट। अगर आप ये कहते हो कि इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, विच इज व्हाट दे कीप सेइंग, तो जो बांग्लादेश ने सजेस्ट किया है उससे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बांग्लादेश को मिलेगा, बिकॉज सही आप बात है। आयरलैंड की कोई और टीम को बोल रहे हो कि भाई आप सारा अरेंजमेंट अपना चेंज करो क्योंकि भाई हमें बांग्लादेश को फिट करना है, राइट? It cannot work. So first and foremost, the root cause of the problem, we all need to identify ki what was the reason between Mr. Fisher leaving, right? Why? What was the reasoning behind it? Uh, Again, if that is the reason, if for whatever reason that has happened, so the way Bangladesh cricket could have approached this, they could have taken this matter up with BCCI, saying कि आपने मुस्तफिजर को किस बेसिस पे निकाला? What is their logical reason? Please give us a reason. That is supposed to be dealt with BCCI for a domestic tournament called the IPL. Let's be very clear. IPL is a एब्सोल्युटली, domestic tournament conducted by the एब्सोल्युटली। BCCI. It has got nothing to do with ICC. अगर आपको आईसीसी इवेंट में नहीं खेलना है तो इसकी लॉसेस इज एग्जॉर्बिटेंट। पहले तो प्लेयर्स जिन्होंने इतना एब्सोल्युटली। अच्छा तैयारी किया है, दे ऑल वुड लूज आउट। बांग्लादेश विल लूज अ लॉट ऑफ मनी व्हेन इट कम्स टू रिसीविंग मनी फॉर होस्टिंग राइट्स, रिसीविंग मनी फॉर टिकटिंग से जो पैसा मिलेगा। दिस इज अ बिगर लॉस फॉर फ्रॉम अ बांग्लादेशी क्रिकेटिंग परस्पेक्टिव एज वेल। सो आई थिंक कि दोनों तरफ से व्हाट शुड हैव बीन डन इज देयर शुड हैव बीन सम कूल हेड्स, rather than look at it as a, a win for like मैं क्या कहूँ, ये this is not a cricketing loss or a cricketing win, this is something out of cricket, this is nothing to do with cricket. So I think it is definitely a very big loss for the cricketing world because there is only 10 cricketing teams that play the game, Rahul. उसमें से एब्सोल्युटली। Bangladesh has got about like I think 20 million viewers. Their cricket team is heavily followed across the world, right? So obviously they not playing the World Cup is definitely a loss for the World Cup. You might think कि like oh India में 1 billion population है, क्या फर्क पड़ेगा टीवी व्यूअर्स? नहीं, it has an impact on TV viewership, it has an impact on cricketing landscape because now you have two major Asian nations along with the third nation which is funding the economy of world cricket. Asia funds the economy of world cricket. Or Asia mein there is a big fracture now, right? You have India and Pakistan that don't talk to each other. Now it looks like India and Bangladesh don't talk to each other as well. So there is a huge fracture in the Asian sub-block which will have a larger impact. Mark my words. आज आपको लग रहा है कि इंडिया इतना पावरफुल है कि like everything gets brushed under the carpet. याद रखिए थोड़े साल पहले England and Australia were at the top of that ICC table, and every time something used to happen, we used to always say, right, कि भाई इंडिया और एशियन ब्लॉक के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है, ऑलवेज इट इज दे आर बीइंग लाइक गिवन अनड्यू एडवांटेज। यही बात हमने काफी साल पहले जब इंडिया और एशियन ब्लॉक का पगड़ा भारी नहीं था तो वी यूज्ड टू से दैट। तभी एशियन ब्लॉक में एकजुट होकर they stood up to the ICC and they were one in, so now the Asian bloc is completely broken, right? So it is a very big issue to be dealt with. I do hope that the right sense prevails eventually, irrespective what the final outcome is. I mean, we all know the outcome. Bangladesh is not going to be playing. Now, सबसे तो मुझे strange लगा कि पाकिस्तान सडनली आके कह रहा है कि हम क्यों खेलें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको 2 वीक पहले तो ये नहीं आई थी कि आपको नहीं खेलना है ना। तो it is very strange for people to come and say that we might think it is pure politics. That's what happens when you put, I'm sorry to say, a lot of political people in cricket administration. It becomes always a question of politics coming in favor of cricket. It's a very big loss for the World Cup. It is a very big loss for the Bangladeshi fans. It's a very big loss for the Bangladeshi people, Bangladeshi cricketers who prepared a lot. It is definitely a loss for world cricket. Let's be very clear. Saying that Bangladesh is not playing and Scotland is playing is no way going to mean that what you have lost is way larger than what you've gained, because you've lost a significant chunk of TV volume, significant chunk of revenue that would have come, and Bangladesh is losing a significant chunk of revenue they would have got from playing in the World Cup. So all in all, it looks more political
posturing from all sides, which has eventually resulted in a scenario where cricket is the sufferer. राइट। और अनूप, मुझे लगता है कि शायद ये चीजें उस फर्स्ट लेवल पे खत्म हो जानी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे बीसीसीआई ने एक बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल से बाहर किया, उसके बाद बांग्लादेश ने अपने यहाँ पे आईपीएल के ब्रॉडकास्ट के ऊपर बैन लगा दिया। फिर इनफ, अब उन्होंने एक एक्शन लिया, आपने एक एक्शन लिया, बात वही खत्म। फिर उसके बाद में बात और इतनी आगे बढ़ गई कि आप खुद का इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि आप उस नुकसान की भरपाई भी करने के लिए काबिल नहीं हो। अब इसमें है ना, Correct. पाकिस्तान का रोल मुझे ऐसा लगता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उस वक्त भारत का स्टैंड क्लियर था कि हम लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल और सब चीजों से, और फिर आईसीसी सबसे ये डिसाइड हुआ कि फिर है ना भारत के मैच दुबई में होंगे, और अगर फाइनल में भारत पहुंचता है तो वो भी दुबई में होगा। इन सब चीजों से बांग्लादेश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। बांग्लादेश वॉज कम्प्लीटली नॉन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वो उनका एक स्मार्ट मूव था और इंटेलिजेंट मूव था, क्योंकि इट वाज द मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दैट मैटर आईसीसी को हैंडल करना था। अब यहाँ पर जो चीज भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में बात हुई, या फिर उसको आईसीसी को हैंडल करना था, दैट्स इट। उसमें पाकिस्तान के बीच में जंप करने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। It's As you basically, likely as you rightly said, there are a lot of political people in the cricket, जिस वजह से क्रिकेट जो है वो क्रिकेट ना होते हुए पॉलिटिक्स हो गई है। मैं एक सिंपल चीज आपको कहता हूँ, ये जो मुस्तफिजुर का जो स्टार्टिंग वाज द मुस्तफिजुर रिमूवल, राइट? हाँ हाँ इमेजिन आईपीएल तो चालू हो रहा है मार्च में, ठीक है? हाँ, टू बी honest with you, a Mustafizur decision could have happened even after the World Cup could have started, right? Nobody would have even absolutely, bothered, right? absolutely, So it absolutely. was basically some sort of without quoting anything, all I will say is that it was not cricket that resulted in that decision. Doesn't look like cricket. That had a cascading effect wherein somebody else decided that I have to take a stand, which is fair, right? I mean, it's their player who's been like taken out of the competition without any particular reason given, right? They haven't specified ki why Kolkata Knight Riders were asked to remove Mustafizur. So nothing wrong in Bangladesh saying, oh, you know what, I want to take a stand. ये अगर इंडिया के साथ होता तो भी इंडिया भी वही स्टैंड लेता, राहुल, राइट? Exactly, थिंक अबाउट इट. exactly, इफ अगर आपके exactly. कल अगर बीबीएल में हमारे एक प्लेयर जाते हैं, अश्विन जाते हैं, लेट्स फॉर एन एग्जांपल से, and for whatever reason BBL just decides to take Ashwin out, right? As Indian BCCI, you will react, right? So Bangladesh reaction is not wrong. By Bangladesh banning the IPL being broadcast is absolutely correct, because in Yeah, that sense they have taken an action for an action that was done, and every action as an equal and an opposite reaction. This is what it absolutely, is, right? So that was the absolutely. reaction. Now what has happened after that is not is way to politics, right? The Bangladesh, coming and saying that we will not play the World Cup because we perceive a security problem, went a little too far, because you don't know what threat you're talking about. It's the same thing that we talk about Mustafizur, right? You haven't given a proper reason. Now here, what is Right. your reasoning? If you're saying that just because India removed Mustafizur, but India didn't tell security as the reason, right? So किसी को नहीं पता कि वो रीजन क्या है करके, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मुस्तफिजुर को निकाला गया क्योंकि सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम थी। तो जब Right. बांग्लादेश ये कहता है कि सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम है, तो आईसीसी यही कहेगा ना, भाई आपको तो 15 दिन पहले भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था ना, आपको Exactly, सडनली 15 दिन में कहां से सिक्योरिटी आ गया, राइट? और exactly. उसके और बाद 2 इंडिपेंडेंट असेसमेंट हुए हैं, इंडिपेंडेंट असेसमेंट में कुछ नहीं आया है, तो इवेंचुअली इट वाज अ बैटल दैट बांग्लादेश कुड नॉट हैव वन. Now, why right. is Pakistan posturing it? Is basically trying to say that like हम कहाँ पे तो like we are supporting kind of thing, just trying to Exactly. किसी के cozy फटे up में to टांग अड़ाना है Bangladesh. तो फिर हम It लड़ा is दें। it is it is trying to cozy up to Bangladesh and trying to say as if they are helping. I don't think anyone's helping at this point of time. What Right. all of these cricketing heads need is something अच्छा अनूप, calmly इसमें to एक resolve और this issue. हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि Mhm. मान लीजिए जैसे अभी पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिकेशन आ रहे हैं, और कुछ ऐसा ही स्टैंड अगर पाकिस्तान लेता है कि फेयर इनफ हमें भी इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करना है, Okay. और फिर आईसीसी अगर कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर भी लेता है, लेट्स से उनको बैन करे या जो भी करे, इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। सो क्या क्या सीन होता हुआ दिखता है आपको? क्या होता, मतलब क्या आगे ऐसा? सीन होगा कि obviously like if Pakistan say we will not play, then in that scenario what is going to happen is they will get another team, whoever is the राइट, team that is one left, that is one thing.
but it will have a cascading impact on any future tournament to be held in the Indian subcontinent. Let's be very clear. Because if I'm ICC, I would say this is getting too shitty. एवरी टाइम देयर इज अ टूर्नामेंट. पाकिस्तान में हमने चैंपियंस ट्रॉफी रखा तो एक और भाई खड़ा हो गया कि हम नहीं खेलेंगे, हमें उसके लिए वी हैड टू मेक अरेंजमेंट इन दुबई, राइट. कोई और टूर्नामेंट था, एशिया कप था, राइट, वट एवर दैट एशिया कप वाज, राइट, वो एशिया कप हुआ, उसमें भी बवाल हो गया. एंड देन दे हैड टू लाइक हैव श्रीलंका में 4 मैच, और इसमें क्या, अभी आपको क्या पता कि श्रीलंका के साथ किसका झगड़ा होगा, राइट. हो सकता है कि कल श्रीलंका वाली गवर्नमेंट और लाइक हो सके पाकिस्तान गवर्नमेंट, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, कुछ झगड़ा हो गया, फिर वो बोलेंगे हम श्रीलंका में भी नहीं खेलेंगे, तो आप क्या करोगे. तो इट माइट हैपन एंड आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी बिग लॉस. तो ये हो सकता है कि आईसीसी विल फ्यूचर थिंक कि डू आई रियली हैव टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड टूर्नामेंट to the Indian subcontinent, because there are too many people fighting against each other for reasons that are way over cricket. So they might say, let's just have all tournaments in Australia, England, South Africa, West Indies, Ireland, maybe, like बहुत जगह है वहां पे भी, like great, we can also grow cricket. यूरोप में रखते हैं, because at least India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh will not fight over the fact whether they can play there, because up to now there has been no problem with England, Australia, South Africa में खेलने के लिए for any of these teams, right? Luckily all the governments are all happy at every point of time there. So agar Pakistan pull out, so first of all it will have a major impact on the World Cup itself, because let's be very clear, Pakistan is the second most probably popular place for cricket, right, after India. That means you're looking at a significant TV chunk volume that goes away. If I am the sponsor, I would seriously come and ask ICC, भाई चल क्या रहा है आपके इधर, मैंने पैसे दिया है भाई आपके मैचेस के लिए, एक टीम बोलता है मैं चला जाता हूँ, दूसरा टीम बोलता है मैं चला जाता हूँ, चल क्या रहा है आपका, ठीक है, राइट. अनुप, मैं जस्ट आपको यहाँ पे बीच में रोकूं, मैं जस्ट व्यूअर्स को कहता हूँ कि जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर करें, हम वो क्वेश्चंस जो हैं वो इस डिस्कशन के दौरान वो लेंगे. Yes, so just to complete it, it will be a very big loss for the Indian subcontinent. When I say Indian subcontinent, it includes Pakistan, it includes Sri Lanka, it includes Bangladesh, it includes Afghanistan. It's generally called as the Indian subcontinent, right? वो continent के अंदर आता है वो, right? So it's a big loss, because tomorrow ICC might think 10 times before scheduling any tournament any of these places. It is a major commercial loss for the ICC, because the sponsor might say give me less money, because if Pakistan does not play, Bangladesh does not play, you're losing a large chunk of viewership. So all in all, I would say that we need some calm, cool heads from really some top establishment who can sit along and like keep away the politics away, and say this is a sport, we are playing a sport, and let's just look for sporting reasons not to play. Okay. चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. लेट्स होप ये चीजें सॉल्व हो जाए और यहीं पर रुक जाए. Hopefully. और आगे और किसी I do hope, I really hope that Pakistan does play, because a World Cup without India, Pakistan would be very strange to watch. Perfect. चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं. जो भी भारत की T20 सीरीज चल रही है न्यूजीलैंड के साथ में, 2 मैचेस हो चुके हैं, एक मैच आज है, और दोनों मैचों में भारत ने बड़ी एक क्लिनिकल जीत इसके अंदर दर्ज करी है. नो डाउट तिलक वर्मा जो है वो अभी फिलहाल नहीं है, उनकी जगह श्रेयस अय्यर टीम में है, बट अभी उनको खेलने का मौका नहीं मिला. फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा राहुल, उनको मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज वर्ल्ड कप की टीम में वो नहीं है. तो इट डज नॉट मेक सेंस फॉर श्रेयस अय्यर टू बी प्लेइंग इन दिस match, because in this tournament, because it does not make sense, because he's not going to be there for the World Cup. So absolutely Ishan Kishan playing is the right call. Right. So overall अभी तक के जो 2 मैचेस हुए हैं, तीसरा मैच आज होने वाला है, और आज के मैच को गिन के 3 मैचेस बचे हैं, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में जाएंगे. तो ओवरऑल कैसी तैयारी देखते हैं, टीम कॉम्बिनेशन कैसा देखते हैं, और कितने चांसेस लगते हैं आपको भारत के? पहले तो भारत की टीम को देख के लोगों को डर लगेगा, टू बी ऑनेस्ट. अगर मैं हिंदी में कहूँ तो लोगों को इंडियन टीम को देख के डर लगेगा, क्योंकि लास्ट जो सेकंड मैच हुई थी, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, आई मैनेज टू सी सम पार्ट ऑफ द मैच बिकॉज द टाइम डिफरेंस इज वेरी हाई. सो I saw the highlights of the full match after the match was done, and I can tell you, watching the Indian batting after being 2 for 6 for 2 was dangerous, because
they got 215 over में, almost 15.1 overs after being, like 6 down for 2 in the first 2 overs. Surya Kumar Yadav was 10 of 10 balls and he got 80 of some 30 odd balls or something like that. So essentially, पहले तो दो चीज, one, the biggest factor there was dew, because it's very clear that New Zealand bowling could not handle the dew factor at all. The bowling changes were, to be honest, very very strange. We can talk about it, but दो ही चीज कहूंगा कि इंडियन लाइनअप को देख के कोई भी टीम को डर लगेगा कि इनके खिलाफ अगर हम बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो क्या ऐसा टोटल डालें जिससे उनको हम प्रेशर में डाल सकते हैं. To see Ishan Kishan play so very well and Surya Kumar Yadav coming back to form, they are two important boxes to be ticked. Let's be very clear. Ishan Kishan is in the team because he's a direct like for like replacement for Sanju Samson, right? He's a top order player. Sanju Samson is a top order player. So if Tilak Verma does not get the nod, then there is no competition. It will be Ishan Kishan who will walk into the squad and Sanju Samson will keep wickets. But if Sanju Samson's form dips and he's not, like in the best of form, then India have got a like for like replacement. They will easily put Ishan Kishan on the top and get back Tilak Verma in. So essentially, you have to be scared of the Indian batting, but I wouldn't say it's the same with the Indian bowling, right? At the end of the day, when you look at Indian bowling, Kuldeep has not been in great form काफी time से. Now Varun's been doing very well. Akshar Patel hopefully is injury prone. Injury is not very big and he's okay. अगर अक्सर इस टीम में खेलते हैं तो this team becomes a lot more formidable because आपके पास almost 8 to 9 batsmen होंगे. Harshit has been playing very well as well. So, you have a good like for like replacement in the lower order as well. So, all in all, I would say that if you are an opponent playing the Indian cricket team in the T20 format, you will be scared. So, definitely New Zealand does not look even close to competing against India. But let's keep that thought because not long ago, we all thought that they were not competitive enough and they actually managed to defeat the Indian cricket team 2-1. So, there is still 3 games, but looking at the two squads, definitely India look lot bigger, lot better, a lot more structured, lot more tune with the game of T20. I think New Zealand की तरफ से अगर आप देखोगे तो I can see a few chinks. First of all, Daryl Mitchell playing at number 5, very strange because he's in red hot form. आप रचिन रविंद्रा को क्यों ऊपर खेलोगे जब आपके पास Daryl Mitchell जैसा प्लेयर है? You can easily drop Rachin Ravindra and get Kyle Jamieson, right? And then get Daryl Mitchell to go up the order. Right? There are multiple options that New Zealand can try. All in all, New Zealand look a far more depleted squad. They are expecting few replacements for World Cup, but all in all, I would say India is firmly on the top for this series. Until some bad thing happens, I don't think India will lose this series in any fashion. They might win it 4-1 or something like that. Maybe one odd game might go here and there, but I suspect it will be a clean, good win for the Indian cricket team. राइट. और एक अच्छी बात ये रही कि वर्ल्ड कप के पहले एक सूर्या का जो एक लॉन्ग ड्यू एक जो फॉर्म जिसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे थे, खैर मैं उतना कंसर्न नहीं था सूर्या को लेके क्योंकि क्या होता है जब आप एक प्लेयर को देखते हैं कि वो बॉल को एक ठीक तरीके से हिट कर रहा है, राइट, वो एक सही तरीका होता है कि हाँ उसके बैट पे बॉल सही आ रही है, दैट इज द वन थिंग. अगर वो चीज ठीक से आ रही है ना तो रन कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं, इट इज द टाइम फैक्टर. बट यस परसों के मैच में उन्होंने रन भी बनाए, बॉल भी अच्छे से उनके बैट पे आई और एक उनको खुद को भी कॉन्फिडेंस देगा, टीम को भी अच्छा कॉन्फिडेंस देगा. और एक लीडर अगर रन बनाता है तो वो हमेशा एक ग्रुप के लिए एक टीम के लिए अच्छी बात होती है क्योंकि वो एक लीड फ्रॉम द फ्रंट का एग्जांपल सेट कर सकता है. Absolutely, because अगर आपकी लीडर रन नहीं बना रहा है, if you are a batsman, then you find it very difficult to go and tell some other player who's not making runs कि भाई आप रन बनाओ, right? So it puts the leader in a tougher position. So you could see the fact that he was so relieved after getting that 50 because it's very important for Surya Kumar Yadav to be in form to be able to assert himself on the squad when needed, right? Because the other player might just think on his mind, ये खुद ही रन नहीं बना रहा है यार, ये मुझे एडवाइस दे रहा है कि भाई आप रन बनाओ. एब्सोल्युटली. और ईशान की बैटिंग देखना वो भी एक बड़ा सुपर्ब चीज थी. बुमराह को रेस्ट करवाना ये एक स्ट्रेंथ शो करता है कि बुमराह जैसे प्लेयर को भी आप बेंच पे बिठा के आप मैच को आप जीत सकते हैं.
तो ये एक स्ट्रेंथ भी बताता है। वरुण ऑफ मैं तो कोर्स इज यही इन वेरी कहूँ गुड फॉर्म। मैं तो यही कहूंगा राहुल कि ये बाकी 3 मैच में भी जसप्रीत बुमराह शुड नॉट बी प्लेइंग एक्सेप्ट द फिफ्थ गेम so that he's getting ready for the World Cup, because you need to think of life without Jasprit Bumrah, because far too long, our Test, One Day and T20 teams have looked up to him to say that ये एक मसीहा है, आएंगे और हमें बचाएंगे. Masiha, great, but I think you need to start to learn to play without him, and it's very good to see that Jasprit is not playing. I would say Jasprit को just आप last वाला game में लेके आइए. That is so that he's match fit enough. I think he's good enough that he does not require too many games to come on board in a Absolutely. World Cup. So I Absolutely. think rather than risk injury or anything like that, you should keep your stock weapon away from such series that have very less meaning compared to the World Cup. So I would say that Jasprit should not be playing. Just play with Harshit and the others, and then go forward and get your other parts of the luck ordered. राइट, राइट। और इट्स गुड कि रोहित शर्मा जो है वो फिट हमको पिछले कुछ दिनों में काफ़ी दिख रहे थे। उसी तरह जसप्रीत बुमराह भी जब खेले तो वो भी काफ़ी फिट दिख रहे थे। तो राइट, ये भी एक अच्छा Absolutely, साइन it's you give them breaks, right? His body will not allow him to play this much cricket, so it's something we need to accept and move on. That आपके पास एक सोने देने वाली मुर्गी है. आप दिन में एक सोना ले सकते हो उनसे, या तो आप एक ही साथ मार के ट्राई करोगे तो बस सोना नहीं मिलेगा आपको, एक ही सोना मिलेगा. तो वो एक सोने की तरह है. सोने देने वाले वो पैसे वाले मुर्गी हैं जो आपको सोने देते हैं. तो आप प्लीज उसको प्रोटेक्ट कीजिएगा. देयर इज नो नीड फॉर जसप्रीत बुमराह टू बी प्लेइंग एवरी गेम. आई थिंक द इंडियन बॉलिंग अटैक इज विदाउट जसप्रीत बुमराह. अगर मैं यही कहूंगा कि अभी भी the biggest mistake they have been doing is keeping Mohammad Shami away from the team. Whatever the reason is, again, it's like that Mustafizur Wala, nobody understands what is the reason, because nobody has communicated the reason. Because he's playing domestic cricket, he's getting wickets, so fitness is not the problem. So there is something else going on there. Now you need to be looking at seeing how can you get Mohammad Shami back into the squad after the World Cup, because Indian team with Mohammad Shami is a lot better than Indian team without Mohammad Shami. राइट, एब्सोल्युटली। अनूप, अब थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। अभी मैं शायद 1-2 सवालों को क्लब करके आपसे बात करूँगा। गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल, स्पेशली कंसीडरिंग ओडीआई टेस्ट मैचेस, फिर उसके बाद में जो टीम का ओडीआई का हम लोगों ने अभी हर्ष देखा, तो इन सब चीज़ों को जोड़ के क्या वाक़ई में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ये सिर्फ़ मीडिया में ही वो प्रॉब्लम फ्लोट हो रही है, या क्या? कैसे इसको आप देखते हैं, कैसे सॉल्व करें इसको? प्रॉब्लम तो है, because Gautam Gambhir has lost too much in Test and now in one-day cricket as well, right? तो ये कहना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है would be wrong. प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा है. उनका टेस्ट रिकॉर्ड is inherently poor. Let's be very clear about it. I can't think of any coach in at least the last 20 to 25 years, or more than that, who have lost 2 home series, that also whitewashes. He has now lost, like 2 consecutive, I think, one-day series. They lost in Sri Lanka, they lost in Australia, they've lost in New Zealand at home, which is 3 series, not even 2, जहाँ पे उनकी one-day they have lost. The squad does not look cohesive enough. मैं cohesive बोलूँगा तो यही कहूँगा कि हमें, when you look at the Test team, you don't find that like they are that world-beating Test team that you are talking about. They don't look like that. The one-day team also has several concerns. So I don't think कि Gautam Gambhir is in the best of spots. He is very lucky to be in that job, because with the amount of failures you've had it been somebody else, he probably would have already been dropped. Think of it, Greg Chappell, जिसको हम इतना कोसते हैं, most of the Indian people कोसते हैं उनको, उनकी रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, is extremely good, right? Under him, India won more. Please look at the record. Forget what happened in in relationships. We're not talking about that. We're talking about cricketing record. So Greg Chappell का record बहुत ही अच्छा है, right? So at the end of the day, Gautam Gambhir is lucky to be in the job without shade of doubt, because the Test and one-day team haven't performed well enough. The Test team hasn't performed for more than a year and a half now. They lost home series, they've lost away series. The only thing that they didn't lose was in England, where they could have lost. Let's be clear, Rahul, that last day में
अगर वो लास्ट नहीं होता, India would have lost 3-1. So you would have had one more series lost. So to say that, we drew the series in England and we have achieved something, no, you were very close to losing the series. So let's just be clear that from a coaching perspective, Gautam Gambhir is under pressure. Uh, Seems to have the backing of the BCCI, which is a completely different perspective. So if he has the backing, then absolutely nothing to be worried about. मैं यही कहूंगा कि when I look at his coaching, I have been a big fan of Gautam Gambhir. Let me be very clear. I have always been for Gautam to take over because I think he brings forth certain qualities that Indian cricket desperately needs. One of them being considering a team sport as a team sport and getting away from individual preferences, right? We are far too much saying कि कोहली ने कितना रन बनाया, रोहित ने कितना रन बनाया, from rather than saying कि इंडिया ने कितने मैच जीते. So his philosophy of Right. at least saying that the team has to come forward is great, but that is not translated into real world result. His methods haven't resulted in results, which means I would say that उनकी coaching style अगर आप पूछोगे तो मुझे यही लगता है कि I think he's far too much into the sport, into the game. मैं यही कहूंगा कि एक अच्छा coach should not be so much in the face. He shouldn't be in the media. He shouldn't be the one who's talked about. मैं बहुत ही सरप्राइज था कल की गेम में जब मैंने नोटिस किया कि ड्रिंक्स ब्रेक में I saw Gautam Gambhir come onto the field and explain something to almost all the players, right? I saw him like animatedly talking to the players, telling them about, no, you shouldn't be doing that. That job is Surya Kumar Yadav's. मैं यही कहूंगा गौतम से as a fan that he has to step back and start thinking he is the coach and not the player. He is not the player representing the country at this point of time. Unki natural tendency, like Kohli, is that aggressive kind of mindset, which works when you are on the field as a player. But you are the coach. You need to take a back step. You need the captain to be more forward. You need the players to be more forward. The coach has to be backward. If you take Ravi Shastri, who was India's most successful coach, I don't think he was ever in the face. I have not seen Ravi come on to multiple press conferences and talk until he has Virat with him, right? Always Virat was with him, right? Most times. Even in the 36 wali case, maybe I didn't see like Ravi Shastri come out all guns blazing or come out. He did what he had to do on the back. Rahul Dravid was a very good backroom staff. You didn't see Rahul Dravid in the press. You didn't hear too much from Rahul Dravid. But what do you see with Gautam Gambhir? The talk is always about Gautam Gambhir. Gautam Gambhir comes out and says things about, oh, this person said this is my answer. You don't have to answer anymore. Gautam Gambhir को किसी को कुछ भी prove नहीं करना है. He is a double world champion who has shown that he is absolutely a wonderful player. There is nothing for Gautam Gambhir to prove to anyone. Say that he is successful. He is already a successful retired player. He is a legend of the game without a shade of doubt. उनकी जो records है वो unimaginable when it comes to World Cup finals. He's won you 2 World Cup finals. So there is no question of he needing to prove anything to anyone. At least बाहर से यही लगता है कि वो आज भी क्रिकेटर की तरह कुछ प्रूव करना चाहते हैं किसी को कहना चाहते हैं कुछ. मैं यही कहूंगा कि आपको किसी को कुछ नहीं कहना है, आपके प्लेयरों को कहना है. आप अपने प्लेयर को इस तरह से तैयार कीजिए कि वो कहेंगे, वो करेंगे और वो उल्टा कहेंगे कि भाई हमारे कोच ने ये किया है. अब ऐसा लग रहा है कि उल्टा चल रहा है वहां पे. बराबर, सही बात है. लेट्स से अनूप, ये चीजें अगर आगे जाके सॉल्व होती है, ठीक होती है और बाहर की टीम ओडीआई और टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करती है, स्पेशली घर के अंदर, तो वो एक अच्छी बात होगी. मेरा यही मानना है राहुल कि द कॉन्सेप्ट ऑफ वन सिंगल कोच मैनेजिंग ऑल द 3 टीम्स इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. वो कॉन्सेप्ट चला गया है. इंग्लैंड हैव नॉट बीन सक्सेसफुल विद इट. लेट्स बी वेरी क्लियर. Brendan McCullum was pushed as the white ball coach. He hasn't done anything in red ball. He hasn't done anything in white ball, right? So it doesn't help because it's very difficult. इतना क्रिकेट होता है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एक सिंगल कोच को 3 टीमों को संभालना जब आपके हर टीम में अलग अलग प्लेयर हैं. इंडिया की जो T20 स्क्वाड है वो बहुत ही अलग है फ्रॉम इंडिया टेस्ट स्क्वाड और इंडिया वनडे टीम की स्क्वाड. तो बहुत डिफिकल्ट है फॉर अ सिंगल कोच टू बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग बिकॉज if I was BCCI, I would look at a split coaching job
Gautam Gambhir will work very good for T20 and white ball. I'm still saying that he will be a lot more successful there because unki methodology, the thing of having more all-rounders, all of that is more a one-day white ball template, which might not be very successful in Test cricket. So maybe India might have to look at a Test के लिए अलग coach, एक अलग set of players who will be representing India in Test cricket, who will focus on Test cricket. That is needed for you to be able to win at every place. So maybe it's time to think on those lines. It's not necessary you need to make a decision now. Obviously, the chances of India winning the T20 World Cup are very high. Unfortunately, our attention span is very less. We will completely forget what happened in Test and one dayers if India win the T20 World Cup. But as a cricket fan and as a cricket analyst, I would say never forget what happened in the Test and one day cricket just because you may be winning the T20 World Cup. It's got absolutely nothing to do with your one day and Test team. The one day and Test team are in a very bad position, whether you like it or not. Your Test team is in a very bad position. Your one day team is not in a good position either. Gautam Gambhir is the coach, and as a coach, you are answerable for your success and failures. If the success belongs to the coach, the failure will also belong to the coach. That is why I'm saying it's time for Gautam Gambhir to say the success belongs to the players, the failures belong to the players. My job is to ensure that the success is higher than failures and put my players, give them the best chance to succeed. That is what he needs to be doing. He needs to take 5 steps back rather than go 4 steps forward. एब्सोल्युटली। तो क्या ये वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद में कुछ गंभीर के कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी आप रिव्यू होता हुआ देखते हैं कुछ बीसीसीआई की तरफ से? नहीं दिख रहा है राहुल, because I have not seen the BCCI ever come out and say anything about what is happening to this team. Right? Nobody is. He seems to have the backing of the people in BCCI. Now that's what it looks like when you look at it from outside. Now we don't know. Maybe internally they're having some conversations which we are not across, but at least from outside, it looks like the BCCI seems to be firmly backing him. If he has the backing of the BCCI, obviously there is no question of any change. But as I said, as a neutral cricket, like enthusiast and supporting a supporter of cricket, I think the BCCI should look at a split coaching system. The Test team has to be completely different from the one day and T20 team, and there has to be a separate coach for the Test team. It has nothing to do with Gautam Gambhir as the coach of the Indian cricket team. I think it's too much of a load with the amount of cricket that is happening nowadays कि आपकी एक ही कोच तीनों चीज संभाले, because I don't think वो तीनों जगह पे अपना इतना अच्छी तरह से कर पाएंगे जितना वो चाहेंगे, because in places like India, anything less than a win is unacceptable to the population, right? So I would say it's high time BCCI thinks about it from a long-term perspective to see if we can split the Test and the white ball teams. Absolutely. So Anoop, really appreciate your presence, your views, your thoughts. और आज के डिस्कशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीक वापस हम लोग मिलेंगे इस पूरे क्रिकेटिंग या स्पोर्टिंग एक्टिविटी के साथ में जो नेक्स्ट वीक होगी, और फिर उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल।